कि यार ड्राविड ने बोला कि भाई थोड़ी शांति से खेलो बोल के, फिर 2 डिफेंड किया नाम के वास्ते, फिर 2 डिफेंड करते ही 2 रिवर्स स्वीप मारा। तो देख कैमरा पैन्ड आउट टू ड्राविड कुछ तो हंस रहा था कि भाई छोड़ दे विक्रम इनको। राठौड़ और द्रविड़, विक्रम राठौड़ और ड्राविड बोल रहे यार यार छोड़ दो इनको, मेरी बस की बात ही नहीं है। इससे मेरे को एक कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दे। तो वाह ये एक जस्ट कि यार आजकल का मेंटालिटी पे एक ये लाइन बड़ी फिट होती है। तो मैंने सोचा यार काफी कुछ प्रेडिक्शंस से निकला, देखते हैं अभी आज भी डे करते 4 पे क्या होगा, आप लोग करेंगे लास्ट में प्रेडिक्शन। पूरी धज्जियां उड़ जाएगी आज की। जो रूट ये टेस्ट सीरीज में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, ही इज बोल्ड लाइक 92 overs and he scored 70 odd runs. So he's a bowler then, he's not a batsman in this trip. see, ultimately baseball ball, ये ball वो ball, it's all about game awareness. इसके आगे कुछ नहीं होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नाइट वॉचमैन पॉडकास्ट। पीपी भाई, डे 3 खत्म, डे 4 चालू होने वाला है कुछ ही घंटों में। हमारे लिए तो यार कितना, 1 घंटे में डे 4 चालू होने वाला है। एक्साइटिंग डे 3 इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बहुत एक्साइटिंग था। बट डे 3 पीपी हम डिटेल में जैसे बात करते हैं सेशन वाइज, कल भी हमने भी स्किप्ड सेशन का, आई थिंक आज का भी स्किप कर सकते हैं। इंडिया का दिन था, क्या बोलता है? Absolutely, we can skip the session because कल जैसे बात की हम लोगों ने कि entire day belong to England. Similarly, this one belong to India thanks to a lot of varied performances. बहुत लोगों ने performance किया bowling में, batting में, डिटेल में बात करेंगे, but the day belong to India and session wise जाने की जरूरत ही नहीं because every बिल्कुल session belong to India, I feel. बिल्कुल। बट बेबी कल डे 3 चालू होने से पहले जब हम डे 2 की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वी ऑलवेज लुक अहेड, राइट? हम Yep. कोशिश कर रहे थे कि ये करने की, सोचने की कि क्या कर सकते हैं। तो हमने Yeah. कुछ छोटे प्रेडिक्शन किए थे जो मैं जस्ट वापस प्ले करता हूँ। जस्ट वील कम बैक टू वंस वी हियर, राइट? In terms of the field placements, how he does not give away fours very easily, make them grind it, also make singles difficult to in and out field जो हम बोलते हैं, he needs to do that, and it's an opportunity for, I would say, Kuldeep Yadav, who bowled a lot of short balls and full balls in the absence of Ashwin, to be the lead spinner, right? This is where the opportunities are created. You could have a situation like जो तू बोल रहा है ना, lead हो सकता है, yeah, they could get bundled out for like 325, 350, who knows? That's literally, that's the high risk cricket that they play. But what I'm saying is, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सिराज, think about England as श्रीलंका, और सिराज जा भाई बॉलिंग कर, सोच श्रीलंका वाले को बॉलिंग डाल रहा है और डाल दो और क्या, राइट? ऐसे करना चाहिए कि भाई जो रूट नहीं, जो मेंडिस है उसको बॉलिंग कर, जो डिसिल्वा है। बीबी भाई, ये था हमारा प्रेडिक्शन। काफी हद तक सही बैठा। विराट कोहली बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा का फील्ड प्लेसमेंट स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में बहुत सही था, पूरा खींच के रखा था। आई नो, प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं हम लोग। क्या ड्रीम 11 कुछ सट्टा मारे क्या हम लोग? ऐप भी नहीं है मेरे पास तो। मेरे पास भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे करने का। I know. हाँ, अभी फर्स्ट सेशन के बारे में। फर्स्ट सेशन भाई, सेशन के बारे में क्या बात करना अभी कि नहीं, तेरा योर पर्सपेक्टिव जो था, जो तू कल बोल रहा था कि यार करेक्ट। See, I did two, मैंने दो चीजें बोला। आई थिंक कुछ प्रेडिक्शन सही निकले, कुछ गलत निकले, बट कुलदीप यादव being the ace guy, ace spinner in the absence of Ashwin, I think that turned out to be true, and kudos to Kuldeep Yadav, who put his hand up and said कि यार हाँ मैं करूंगा, and he actually is releasing the ball really well, and रीड ही नहीं कर पा रहे थे इंग्लिश बैट्समैन की, अरे अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, जुरेल भी, कीपर भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पकड़े, राइट? बराबर। सो दैट वाज गुड। एंड जो तूने सिराज का बोला, सिराज का सही निकला यार, वो तो मिया मैजिक था कि ओली मेंडिस और कौन, जेम्स धनंजया श्रीलंका सोच के बॉलिंग डाला,
Sahi. I think he gave what 3 or 4 wickets, and 4 it was a wickets. fiery spell. It was a fiery spell from बिल्कुल, him. So I बिल्कुल. think glad that we were able to bundle them for, like you were saying, here we were if we get a lead and bundle them by before 350, वही हुआ, and this lead is like gold dust for us at this point, Oh yeah. and because we don't have to do much in third innings, so that the pressure is on England in the fourth innings. Here the ball will definitely turn, I feel, and it'll be difficult for हाँ, them to play in fourth innings. But काफी कुछ predictions से निकला. देखते हैं अभी आज भी डे करते 4 हैं. पे क्या होगा हम लोग. हाँ, करेंगे लास्ट में prediction. पूरी धज्जियां उड़ जाएगी आज की. भाई साल में एक बार prediction काम करता है, तो तभी ढिंडोरा पीटना है ना हमको. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. बट यार पीपी 3 व्हाटएवर फटाफट ऑल आउट हो गया इंग्लैंड. वो लोग ने ज्यादा कुछ किया नहीं एक्चुअली सेकेंड इनिंग में. बट उनका कुछ विकेट्स वर जस्ट माइंड ब्लोइंग. 319 पे ऑल आउट हुए. जो रूट 2 मिनट जो रूट पे बात करते हैं भाई. I know baseball चल रहा है, he's bought into the thought process of being ultra aggressive. ठीक है. मुझे नहीं लगता है जो रूट is such a classical batsman. उसको जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है. बैटिंग लाइनअप देखो, ओपनर्स खेल रहे, मार रहे. नीचे वाले स्टोक्स है. स्टोक्स कभी भी गेयर बदल सकता है, और भी है. आई थिंक स्टोक्स अपना जो रूट मिडिल में है, बेयरस्टोन भी है. जो रूट मिडिल में, आई थिंक ही जस्ट प्लेज हिज नॉर्मल क्रिकेट, और वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है. आई डोंट थिंक ही नीड्स दिस अल्ट्रा एग्रेसिव. वो नॉर्मल भी खेलेगा ना, ही कैन गो एट 50-60 व्हिच इज स्ट्राइक रेट, व्हिच इज वेरी गुड. सो आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड with this. But any thoughts on Joe Root? Yeah, I think couple of things. First of all, in the last match also we discussed the thing. Was it the injury or was it the baseball style? You were saying Yes. it was the baseball style. I was saying it is injury. And right now was playing at 50 strike rate before he planned to reverse sweep Bumrah of all people. Correct. Right. So Sorry. it feels like the baseball style is taking precedence here. But see, I mean, it can get exciting when it works out, and it gets frustrating for English supporters when it doesn't. And this time it didn't. But I heard a very good clip by Nazir Hussain. He gave a good words. Here, खेलो तुम, तेरे को reverse sweep खेलना है, करो ये करो. But look at the moment in the game where he did it. Bumrah is playing third test match on the troll, right? On the 3 consecutive test matches. Yep. And it was he will stop bowling another 1 over or 2 overs. Ashwin is not there. Jadeja is slightly injured, right? All you have to do is just see off Bumrah and then milk other bowlers, right? And that's what you need to do here, because Siraj is not a threat for Joe Root level thing. जिस हिसाब से वो खेलता है. So given that all the factors, he could have seen Bumrah off. He didn't have to take him on. And he was not doing the baseball thing till that shot came up, right? Because he was playing, like I said, at 50-60 strike rate. कुछ 30 balls, 18 runs ऐसे कुछ तो कर रहा था. Unlike the previous test match, जहाँ आते ही मारने लगा. Right? So I still feel the previous test match a little bit about injury, but he's still showing signs of atrocious shots and doing the baseball style. My 2 cents on this is when last time he came to India, he scored big. When he went to when he went to Sri Lanka, he scored big. He was a top batsman. He was a superstar batsman. He still is the superstar in their lineup. But right now there are other stars that are coming up. Ben Duckett and Zach Crawley, and he's not the captain anymore. So Ben Stokes has got the limelight. Only Pope ne century mara hai. So I feel like sometimes superstars, when they don't feel like superstars, they feel a little anxious and fidgety, and they try and do something different. So to come back to that mold, right? So that could be a factor. I'm just speculating here more than anything. But I think तूने कोई अच्छा स्टैट निकाला था, right? और शास्त्री ने बोला था कि वो क्या था वो? शास्त्री, जो रूट ये टेस्ट सीरीज में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है. He's bowled like 92 overs and he scored 70 odd runs.
So He's a baller then. He's not a batsman in this strip. which was very interesting to see. Yeah, but again, yeah, classical batsman. He Yeah, doesn't need to change his game. He just needs to go back to what he was doing before. Baz McCallum, correct, captain था तभी था. वो खेले. I think it's more than enough. There are openers जो ultra aggressive है. जॉनी बेयरस्टोन थोड़ा ये है, बट जो अपना बेन स्टोक्स है और प्लेयर्स है यार, उनके नीचे वाले भी आते हैं, वो लोग भी मारते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है. correct. तो ही कैन बी, और सी अल्टीमेटली बैस बॉल बोल, ये बोल वो बोल, इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस. इसके आगे कुछ नहीं होता है. जो तू बोल रहा है ना, वही है गेम अवेयरनेस, है ना. बी Yeah, अवेयर कि एक ओवर के बाद बुमराह का स्पेल खत्म हो जाएगा, रुक जा, 10 मिनट रुक जा भाई, 10 मिनट रुक जा, और कुछ नहीं, मारना फिर. बट ठीक है यार, विल मूव ऑन. it'll be interesting to see how he bounce backs from this, because he's a like we आई नो. discussed yesterday. He's like a classical batsman, top one of the batsmen of this era, and Fab Five mein aata hai. Hope we'll see how he bounces back. Hopefully he bounces back for world cricket, but for sake of Indians, he doesn't bounce back. But it'll be a test for McCullum's coaching as well, in terms of what guidance and what is his word of advice to Joe Root, right? And it's clearly clouded right now. So this is one of the good tests for Baz McCullum as a coach, in terms of managing Joe Root and still making him feel special, because making players feel special is one of the core parts of coaching at that high level, more than technique and whatnot, right? So right now I मैन feel like मैनेजमेंट. Joe Root needs that, in my opinion. यप. अच्छा, अब मेरे को बता, फोर्थ इनिंग आने वाली है. जो रूट, विल ही कंटिन्यू दिस स्टाइल, या विल ही लुक एट द सिचुएशन एंड प्ले अकॉर्डिंगली? मेरे हिसाब से, except that shot, he was being his classical best. I think he'll do that. And depends on how much they will be chasing. Yeah. If they are chasing 450 and then, or sorry, maybe 500 plus, depending on how we bat, in about 4 sessions ish, they'll have to play at 4 plus strike rate. Sorry, 4 plus Run economy, rate. right? Yep. It's a run rate. Yeah. So he might have to get aggressive. So it all depends on that. If it is about 4.5, I think he'll still continue as the baseball style, and it'll be interesting if it doesn't work out, what his strategy will be for the last 2 test matches. But it'll be a riveting day of test cricket when they come back to bat after we finish batting. Yep. Maybe most likely the last session of day 4. करेक्ट. और काफी कुछ है बात करने के लिए, तो विल मूव ऑन. जॉनी बेयरस्टोन का एक विकेट था, राइट. कुलदीप यादव, ब्यूटीफुल बॉल, लाइक वो, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर बाबर आजम को जो वनडे में बॉल निकाला था, और काफी लोगों वर्ल्ड को कप में किया, वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप आई थिंक में निकाला था, और काफी लोगों को किया उसने, ऐसा नहीं. तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल, मस्त फ्लाइट, टर्न, एवरीथिंग. अंपायर ने आउट दिया, धर्मसेना, राइट. थर्ड अंपायर के बाद, it was funny to look at the third umpire, क्योंकि थर्ड अंपायर का क्या, they follow a process, right? they पहला स्लो मोशन में देखते हैं, फिर they ask for ultra edge, then they go to ball tracking. इस केस में स्लो मोशन देखा और he went to ultra edge. भाई, बैट मुंबई में थी, बॉल पुणे में था, तुमको क्यों चाहिए अल्ट्रा एज? क्यों टाइम पास कर रहे हो? मूव ऑन यार, मूव ऑन. बट it was just interesting. Like, I know they have to follow the protocol, but there was no need. Actually, on this, we've seen third umpires expedite things, right? They इतना टाइम नहीं लेते, तो it was just like, it's not, I know we are nitpicking here, but यार इस केस में जरूरत नहीं था, बकवास था बहुत. Why do you need ultra edge for that? But पता नहीं, आई थिंक मुंबई हाईवे एक्सप्रेस बना है ना अभी, तो बहुत फास्ट है, तो उन्होंने सोचा कि यार चल जल्दी करते, 1 मिनट में फिनिश करते. बट आई थिंक, I don't know if it's a protocol from ICC asking them to do it for the sake of doing it, irrespective of the naked eye में दिखता है clearly. So I want to give the benefit of doubt to the umpire कि यार ICC का mandate होगा. But I have also seen in some cases कि यार भाई कुछ umpires तो very बोलते हैं यार पट करो. quick, They don't want all the different angles, right? So I forget who the third umpire was in this case, but they should keep quickly move on. Definitely in T20, right? They don't spend too much time these days, because they have to finish on time. In Test cricket, also hopefully they'll do that so that they don't drag along these decisions. Yeah, but overall bowling बढ़िया थी. Everyone chipped in. Siraj bowled beautifully.
राइट, उसका स्पेल बहुत मस्त था, यॉर्कर वगैरह भी डाला यार, रेहान अहमद का जो बोल्ड था, चाहे आई नो एंडरसन इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन बट स्टिल वो फंसने नहीं दिया, फटाफट निकाला सबको। करेक्ट। बट बुमराह, एवरीवन चिप्ड इन, सो वो हम जो थोड़ा नर्वस थे कल, वो नर्वसनेस थोड़ी कम हुई। और मूविंग ऑन टू इंडिया का बैटिंग यार, I was disappointing to see Rohit get out, but again, Jaiswal, man, this guy, क्या खेला है यार। पीपी, वो बोलते हैं ना, वो एक माइंडसेट था कि लेट मी गिव सामने वाले को थोड़ा टाइम, फिर मैं तोड़ूंगा। वही किया, स्टार्टिंग में शांति से खेला, या स्पेल्स निकाला, या थकाया, और फिर वो एक और एंडरसन का था जिसमें 20 कुछ रन आया, उसके बाद तो तोड़ दो। एग्जैक्टली उसने आई थिंक इनिशियली वो 30 स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, ऐसा कुछ तो हाँ हाँ 30 बॉल्स 10 रन्स 40 बॉल्स 10 रन्स समथिंग लाइक दैट। मैं एक्चुअली लाइव देख रहा था तभी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, ही वाज क्लोज टू 90 इश, तब एक मैसेज आया ड्रेसिंग रूम से, एंड I saw that. I saw that. कमेंटेटर्स वर ट्राइंग टू गेस कि यार क्या मैसेज होगा, कि यार ड्राविड ने बोला कि भाई थोड़ी शांति से खेलो बोल के, फिर 2 डिफेंड किया नाम के वास्ते, फिर 2 डिफेंड करते ही 2 रिवर्स स्वीप मारा, तो कैमरा पैन्ड आउट टू ड्राविड कुछ तो हंस रहा था कि भाई छोड़ दे विक्रम इनको, राठौड़ और द्रविड़, विक्रम राठौड़ और समझ द्रविड़ गए बोल रहे यार। यार छोड़ दो इनको, मेरी बस की बात ही नहीं है। इससे मेरे को एक क्विकली याद आया 30 सेकंड कमली कि जब तेंदुलकर और सहवाग बैट कर रहे थे ना, कि यू क्लासिक वी नो दैट स्टोरी अबाउट हिज 295 एंड तेंदुलकर ऑलवेज टेलिंग हिम कि भाई आराम से खेल, आराम से खेल, आराम से खेल। Even Ganguly has told enough stories of that. Oh, I yeah. think I forget now, it's Ganguly or तेंदुलकर। सहवाग बता रहा था स्टोरी कि यार ये लोग आके मेरे को बोलते कि यार आराम से खेलो, फिर जाके बोला बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर नाम के वास्ते एक डिफेंड किया, डिफेंड करने के बाद जाके बोला हो गया डिफेंस, नेक्स्ट बॉल फिर से चक्का मार राइट, तुम लोगों के लिए डिफेंड कर रहा हूँ मैं, तो फिर मैं मारता हूँ। जायसवाल भी वैसे ही माइंडसेट का है, यंग ब्लड, एंड अगेन टिल इट वर्क्स आउट इट लुक्स गुड एंड इट इज गुड, एंड रिवर्स स्वीप अभी इट्स बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेस्ट क्रिकेट लुक्स लाइक, तो hopefully other batters who have not played reverse sweep don't get tempted like Gill and others, and who are classical batsmen have not tried this, right? So hopefully they don't get tempted much, but yeah, Jaiswal is a great find for us, and hopefully I know you're retired हुआ है अभी, back में कुछ problem आया, Back hopefully spasm. nothing major, and he comes back and makes it big and scores maybe a double century for us. Yeah, वो बेसिकली वो गाड़ी चला रहा था, फर्स्ट गियर से सीधा 5th गियर पे गया वो, Exactly. राइट, फर्स्ट गियर से 5th गियर पे, मतलब वो ओवर के बाद वो छोड़ ही नहीं रहा था, मार आगे Correct. आके मार, फुल टॉस पे लेके मार, रिवर्स स्वीप मार, बट आई थिंक वो बैक स्पैज्म भी कहीं ना कहीं उसको, ही डिड अ लॉट ऑफ लाइक Sweeping स्वीप्स, and फुल reverse टॉस पे sweeping. लेके स्वीप्स मार रहा है, रिवर्स स्वीप मार रहा है, it does impact you, but I think he'll come back. कोई बड़ा ये नहीं है, but Gill played well, gave time Yeah. to the bowlers, patience, Yeah. again he wasn't his fluent best, but it's okay, Yeah. right, as long as you're scoring runs, it was good to see him grind a little bit, Yeah. ये रोहित शर्मा और गिल का एक ये है कि दोनों when they are in good form, good nick, they make it look effortless, but दोनों ही नहीं किया, but दोनों ने runs किया, which is important, which is the most Yeah. important thing, Yeah. right? I think fantastic. I mean, he, like you said, he grinded it out, not clinical, but he's scoring the runs and he's still there, more importantly, right? Correct. So That is the most important thing, yeah, that he's hopefully he still there. makes it big as well. He needs a Yep. century and he needs that confidence and he needs to spend time in the middle more. So hopefully he can continue and play long. Yep. पीपी, यशस्वी जायसवाल, बोलते हैं ना अभी आजकल टर्म्स बहुत आ रहे हैं, आजकल टर्म्स आ रहे हैं, बैस बॉल, अब कोई बोलता है जैज बॉल, ये टर्म्स बहुत आ रहे हैं, बट द थॉट बिहाइंड ऑल दिस इज कि भाई जब एक प्लेयर है, राइट, उसको डर क्या है, राइट, कि डर है कि मैं आउट हो जाऊंगा, आई कैन लूज माई स्पॉट, राइट, बट जब मैनेजमेंट उसको वो कॉन्फिडेंस देता है
कि भाई डोंट वरी, वी विल बैक यू, तब जाके वो फ्री माइंड से खेल सकता है, राइट? तो एक एक इसका एक रेफरेंस ये है कि एक लाइन है बेसिकली कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दे। तो ये एक जस्ट कि यार आजकल का मेंटालिटी पे एक ये लाइन बड़ी फिट होती है, तो मैंने सोचा यार लेके आऊं। कल पीयूष मिश्रा का शो देखा था, तो उधर से एक लाइन आई थी, मैं लिटरली शो में बैठ के ये उसने गाया और बोला ये जायसवाल या बेसबॉल जो भी जायसवाल सब पे बराबर फिट बैठता है। बट भाई कमली तू तो शायर हो गया यार, मतलब तू उधर जाके भी तू पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा है कि तेरे 25 सब्सक्राइबर्स को कैसे एंटरटेन करेंगे। कमिटमेंट है भाई। कमिटमेंट है। नहीं यार सही, आई थिंक कभी आई फॉरगेट हु सेड दिस कि यार द फास्टेस्ट वे ऑफ फेलिंग is the fear of failure. Correct. What that means is कि यार more you fear, more chances of you failing. So and it's a topic that's easier said than done. आसान है बोला कि यार डरो मत हो जाओ, right? When people are getting dropped, Shreyas यार बाहर गया, and people are it's not कि यार there are not many people, talented people waiting for you, waiting in the line. There are so many of them. सरफराज खान को आज डिस्कस 4 साल के बाद चांस मिला है, right? When you have that mindset, it's hard to be fearless, but in spite of all that, if they are able to be fearless, hats off यार, hats off सच में, मतलब I truly believe कि यार fearless होना है, but बोलना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। करना नहीं है भाई, मुश्किल। हाँ, exactly. And especially as you get more experience and you more एक नाम बनता है, then there is 2 commitments. One commitment for yourself कि यार देख, I want to be consistent. अभी Kohli and all that have set the benchmark here. It is not about scoring century once, twice. The benchmark is scoring century every 3-4 test matches, or scoring big in all different countries that you play in, right? So that benchmark set करने के लिए ये लोग को, I think they have to be hungry and keep doing it, and if they can do it in Sehwag style, being fearless, that'll super entertaining and good fun for us to watch as well. Good fun for all to watch. But PP, moving on, और भी बहुत कुछ हुआ है, right? एक you were talking about, I know this is we are talking about day 3, but day 2 पे एक interesting चीज हुई थी, penalty. जो do you want to shed your thoughts? क्या what do you think about that? So just set context. तो क्या हुआ था? Ashwin ran on the pitch after he tapped the ball. He attempted a run and he couldn't. He walked back. So that was the second warning for the team. It was the first warning for Ashwin for walking down the pitch. There is a red zone. Correct. And he walked on that, and they were rewarded. India got subtracted 5 runs. 5 runs penalty tha, right? And correct. Ashwin went in and I think had a discussion with the umpire. I think Ashwin again post match में बोला गया कि यार Ashwin was trying to make a point कि यार intentional नहीं था. And for umpires, it doesn't matter whether it's intentional or not intentional. If it is done, it's minus 5 runs, right? Correct. But English media and ex-English cricketers have to. I think Alistair Cook ने tweet किया कि भाई ये तो Ashwin का strategy है, ये intentionally किया है उसने बोल के, right? Because you want to create that rough and then use that for a spinners, right? What do you think? कि यार पहले जडेजा ने किया, फिर Ashwin ने किया, those spinners. So it could mean that कि यार कुछ हुआ. तो I have कि यार वो intention ना कि नहीं. But what is your perspective on that? Look, again, I'll try to keep it simple. Ashwin को ऐसा चीज कोई कुछ बोलता है, he's not gonna stop, he's gonna give it back. अपन ने लास्ट टेस्ट मैच में भी देखा, जब अंपायर टाइम हो गया था, अंपायर वाज नॉट, एक और ओवर खिला रहा था, तो वो जाके नड़ लिया अंपायर के साथ, वो उसका थोड़ा तो में हो गया. इस केस में it was clear cut. He was running in the middle, right? और जब अंपायर ने उसको ये बोला, he did not retaliate, right?
he accepted and moved on. So intentional था या नहीं, but I think Ashwin knew कि what he did, he went on the middle of the pitch, he knew that. And एक image भी है उसका. Mhm. So here is what has happened, right? So Yeah, if you look at this, right, his foot is in the red zone, yeah, and the red zone is the danger zone, right? So yeah, intentional है कि नहीं, I'm not going to get into that, but I think Ashwin knew गलती हो गया. अश्विन जैसा बंदा गलती नहीं करता है, वो उसको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, तो वो छोड़ता नहीं है, बट आई थिंक ही एक्सेप्टेड एंड मूव्ड ऑन. सो correct. इट्स ओके. इंग्लिश मीडिया कैन से व्हाटएवर दे वांट कि इंटेंशनल था. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट गलती हुआ, मूव ऑन. 5 लिया पेनल्टी, मूव ऑन. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. Yeah, yeah. I don't think it was intentional, but it is a speculation right now because Ashwin करेक्ट. can be smart because why am I saying that is based on his body language, the way he ran. Because in the red zone there was 1.5 steps taken, so करेक्ट. definitely it is fair for umpires to penalize या him. But करेक्ट. for English media to say this, it is intentional. I'm sure Alistair Cook has played a ton of cricket against Ashwin and he knows him better. But at least just on the clip look से मेरे को नहीं लगा कि यार वो intentional था. But I think it's a moot point right now because penalty हो गया है. आगे पेनल्टी हो बढ़ो. गया, ले लिया, मूव ऑन. Yeah, पीपी, इंडिया का in the Indian batting is in a transitional phase, is in a true transitional phase. और ये कल जब मैच चल रहा था ना, एक पॉइंट था विकेट कीपर ध्रुव जुरल, फर्स्ट स्लिप पे सरफराज, सेकंड स्लिप पे अपना यशस्वी, और गली रखा था, गली पे पटीधर था. इट वाज लाइक, आई वाज लाइक यार, गोइंग बैक इवन लाइक 2 years बैक, तेरा कोहली से लेके अजिंक्य रहाणे, पुजारा भी आता था, या रोहित शर्मा, ये था yeah, अपना स्लिप कॉर्डन. वो yeah, पूरा चेंज हो गया. बट दिस इज, आई मीन, इट्स गुड टू सी यंग ब्लड कमिंग इन. इट्स जस्ट, यू नो we are, it sounds like we are moving on from some of the, I'm not going to call them old guys, but some of the experienced guys that we've been used to see, इतना देखा है लास्ट yeah, 10 साल से. yeah, So वो एक just interesting, बहुत एक moment था जब, sometimes you sit back and you think like, okay, yeah, लगता है we are moving on from these guys. yeah, yeah. ठीक है पीपी, we'll quickly just try and do our predictions. देखते हैं, do we fall flat on our face or do we get it right this time? But maybe day 4, 45 minutes है to go for day 4. क्या बोलता है भाई? What do we need to do? मेरा prediction है, we need to do a हाँ. lot of things, but मेरा prediction बताता हूँ पहले हाँ. कि we have already कितना अभी target lead is around 322. Correct. Right? And my goal is to give England 4 sessions to bat, which Okay. means we bat for 2 sessions today. Correct. And 2 sessions, which is about 60 overs, Hmm. score at around 3 to 4, 3.5 ball ki soch. So around 200-ish runs, which means our Okay. lead will come to around 520. Hmm. So 320 plus 200 runs, 520. And give England about 4 sessions to bat, which means about 120 overs. Yeah. And they'll have to score at 4.3 strike rate or run rate, sorry, 4.3 run rate, right? Baseball era mein 520 seems big, but it's possible, right? I mean, 520 looks big in general, but in baseball era it looks possible. Yeah. And 4.5 strike rate is nothing for them. So in and Yep. around 550 target then I am go. That's what we need. We don't need to do anything fancy. We don't need to do any baseball stuff. Do Yeah. the regular thing, and I think hopefully you can add 200 more and give them 4 innings, 4 sessions to bat. Yep. I am with you. I am also on the same page कि भाई 200 और बनाओ, 550 तक देख के, टी टाइम तक डिक्लेयर आने दो फिर उनको. और what मजा ये आएगा कि अज्यूमिंग ये होता है, इंग्लैंड को 550 भी दिया, 4-4.5 रन पर ओवर भी जाना है, जाएगा वो लोग. तो अगर ये जो हम बोल रहे हैं ये होगा, दिस टिपिकली एक टेस्ट मैच में 550 यू स्टार्ट प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, ये नहीं होने वाला है, तो मजा आएगा.
राइट. Correct. ओवरऑल 2 दिन एंटरटेनिंग, 2 दिन बाकी है अपने लिए. राइट. ये था पीपी. और कुछ, एनीथिंग एल्स, लास्ट पार्टिंग वर्ड या एनीथिंग दैट वी मिस्ड? Last parting words. Why? Hopefully this test match doesn't become like another memorable for Ben Stokes in his kitty where he can pull off the impossible. He has done many of these. So hopefully Ben Stokes doesn't give we don't give him a chance. So Bumrah will take care of him. But hopefully I think उसके लिए time है. पहले तो अभी let's hopefully Ashwin can come back. I know he's still taking care of his family, but Dinesh Karthik has confirmed that if he comes back, he can come back and ball immediately. There is nothing like cool off period or anything like that. So correct. Another 2 days of riveting test match days remaining. So looking forward. And the एक session तो देखूंगा मैं. I don't know. तू देखेगा बैठ के रात पर? 2 सेशन तो बनता है. 2 सेशन देखेगा तू? मैं कल भी आई वेंट टू बेड एट लाइक 3 in the morning. 2 सेशन देखा मैं. सो के देख रहा था, बस देख रहा था. आज भी 2:45 मेरे इधर, 2:45 तेरे इधर, आई नो 3:45 हो जाता है, बट मेरे इधर 2:45 तक चलता है. तो आई एम प्लानिंग टू वॉच 2 सेशंस. तो देखते हैं आगे क्या होता है पीपी भाई. तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं. वील कम बैक पीपी टुमारो. बट जो हमारे दोस्त ये देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जहां भी आप हमको देख रहे हैं. बाकी कल मिलेंगे. थैंक यू पीपी भाई. मिलते हैं कल. जय राम जी. जय राम जी. जय राम जी की.